कहाँ पे होता? In the year 1995, a spacecraft called Luna 2 was launched on the Earth. Luna 2 was landed on the moon. Describe how the weight of Luna 2 सभी का स्वागत है। एक महान वक्ता, एक विनम्र इंसान, संपूर्ण रूप में एक सक्षम राजनेता और एक अत्यंत प्रभावी व्यक्तित्व की धनी सुषमा स्वराज ने मानवता की सेवा में जीवन को अर्पित कर दिया। चेहरे पर तेज, वाणी में ओज और जीवा पर सरस्वती उनके व्यक्तित्व को अनोखा बनाता था। भारतीय राजनीति की स्तंभ रही पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने कुशल नेतृत्व से इस देश के लोगों के जीवन में बदलाव लाने की पहल की। सिर्फ 25 साल की उम्र में जब वो विधायक चुनकर आई तो फिर उन्होंने पलटकर नहीं देखा। उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली उसे सुषमा स्वराज ने जी जान से निभाया। सुषमा स्वराज इतनी मृदुभाषी और मिलनसार थी कि हर कार्यकर्ता को उन्होंने अपना परिवार समझा। तभी तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्षी दलों में भी सुषमा स्वराज खासी लोकप्रिय थी। लोग उनका बेहद आदर करते थे। जीवन भर राष्ट्र और समाज की सेवा करने वाली सुषमा स्वराज ने अपने निधन से कुछ समय पहले ही सरकार के कश्मीर पर लिए गए फैसले पर बेहद खुशी जताई थी। आने वाली पीढ़ियां उनके शानदार व्यक्तित्व और अद्भुत भाषा शैली को कभी नहीं भूल पाएगी। तो है ना, तुम किसी मॉल में भारतीय राजनीति में सुषमा स्वराज ऐसी शख्सियत थी जिन्हें हर पार्टी, हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों का भरपूर प्यार मिला। तेज तर्रार और प्रखर नेता की छवि रखने वाली सुषमा स्वराज उन दिग्गज नेताओं में से एक थी जिन्होंने अपने ओज और तेज से समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की। उनके राजनीतिक कौशल और भाषा शैली ऐसी थी कि हर कोई उनका मुरीद था। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और भारत सरकार की पूर्व विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज का जीवन हमेशा ही राजनीतिक स्वच्छता का उत्कृष्ट उदाहरण रहा। We live by the credo of Vasudhaiva Kutumbakam, a Sanskrit shloka, which means the world is one family. वो प्रखर वक्ता के साथ ही कुशल और परिपक्व राजनेता भी थी। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला कैंट में हुआ था। अंबाला कैंट के सनातन धर्म कॉलेज से संस्कृत और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के बाद सुषमा ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से कानून की डिग्री हासिल की। वे भाषण और वाद विवाद में हमेशा से आगे रही। कॉलेज के दिनों में सुषमा स्वराज ने लगातार 3 वर्षों तक एनसीसी की सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार जीता। वे हरियाणा सरकार के भाषा विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लगातार 3 बार सर्वश्रेष्ठ हिंदी वक्ता के पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1973 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। सुषमा स्वराज का विवाह 13 जुलाई 1975 को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील स्वराज कौशल से हुआ। परिवार को भी संभालते हुए और अपने राजनीतिक जीवन को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया और सब दलों के नेताओं के साथ जिस प्रकार से उनके मधुर संबंध रहे, वो भी अपने आप में एक मिसाल। मैं ये कहूंगा कि महिला सशक्तिकरण अगर राजनीति में किया है तो उसका एक उदाहरण सुषमा स्वराज जी ने प्रस्तुत किया है, और जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि हमारी लोकसभा में 78 महिलाएं जीत कर आई हैं। तो महिला सशक्तिकरण किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को, उसको सुषमा जी ने हमेशा बढ़ावा दिया।
सुषमा स्वराज ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। उनके पिता हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सदस्य थे। आपातकाल के दौरान सुषमा स्वराज ने जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके पति स्वराज कौशल सोशलिस्ट लीडर जॉर्ज फर्नांडिस से जुड़े हुए थे और सुषमा स्वराज 1975 में फर्नांडिस की लीगल डिफेंस टीम का हिस्सा बन गई। आपातकाल के बाद वो जनता पार्टी की सदस्य बनी। 1977 में पहली बार सुषमा स्वराज ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीता और महज 25 साल की उम्र में चौधरी देवीलाल सरकार में हरियाणा राज्य की श्रम मंत्री बनकर सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने की उपलब्धि हासिल की। 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के गठन पर सुषमा बीजेपी में शामिल हो गई। वो 1987 में अंबाला से दोबारा विधायक चुनी गई और बीजेपी लोकदल सरकार में शिक्षा मंत्री बनाई गई। उनकी कार्यशैली और कर्मठता की वजह से धीरे धीरे पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया। देखिए, सुषमा स्वराज जी का जो राजनीतिक जीवन है, लंबा राजनीतिक जीवन है, वो उनका स्वयं का बनाया हुआ जीवन, सेल्फ मेड हम जिसको कहते। उनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं था और वो तो जब वो विद्यार्थी काल से ही सक्रिय थी और वो प्रभावी एक वक्ता थी, जिसके चलते वो, जिसको हम कह सकते हैं, वो छात्र नेता बनी। और इसीलिए जब 1977 में जनता पार्टी बनी और उस जनता पार्टी में वो शामिल हुई और वो वहाँ हरियाणा में उन्होंने एक एमएलए का चुनाव जीता और उस समय वो हरियाणा की सरकार में 25 साल की उम्र में सबसे कम मंत्री बनी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1990 में सुषमा स्वराज राज्यसभा की सदस्य बनी। 6 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 1996 में दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीती और अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गई। इसी दौरान उन्होंने लोकसभा में चल रही डिबेट के लाइव प्रसारण का फैसला किया था। 1998 में वे दोबारा दक्षिण दिल्ली संसदीय सीट से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। इस बार उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ ही दूरसंचार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। उनके लिए इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय फिल्म को एक उद्योग के रूप में घोषित करना रहा। केंद्र की राजनीति में आई, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनी और प्रवक्ता के नाते भी उनका जो एक जो हम कह सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व था वो और उभरा। मृदुभाषी होने के कारण और हर तरह से हर समस्या को, हर प्रश्न को सरलता के साथ जिस तरह से वो उसका करती थी, उत्तर देती थी, उसके कारण वो पत्रकारों में भी बहुत ही लोकप्रिय हुई। और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा वो राज्यसभा में आई, फिर लोकसभा के कई चुनाव लड़े, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और 2009 से 2014 तक वो नेता विपक्ष रही लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी। अक्टूबर 1998 में सुषमा स्वराज ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और बतौर दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। हालांकि दिसंबर 1998 में राष्ट्रीय राजनीति में वापसी की और 1999 में कर्नाटक के बेल्लारी से कांग्रेस की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन वो हार गईं। फिर साल 2000 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद के रूप में संसद में वापस लौट आईं। अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो फिर से सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गईं। बाद में उन्हें स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया। 2009 में सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश के विदिशा से लोकसभा पहुंची। उस वक्त 15वीं लोकसभा में वे नेता प्रतिपक्ष बनाई गईं। 2014 तक वो इसी पद पर आसीन रहीं। 2014 में वो दोबारा विदिशा से लोकसभा चुनाव जीती और नरेंद्र मोदी सरकार में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री बनाई गईं। उनका पार्टी में बहुत अच्छा प्रमोशन हुआ, तो पार्टी में उनका बीजेपी में ज्यादा विमेन लीडर्स नहीं थे। विजय राजे सिंधिया के अलावा ज्यादा बड़े लोग तो उस समय थे ही नहीं है। फिर इनको अच्छा बढ़ावा देके बढ़ाया और उनको स्पोक्स पर्सन बनाया, जनरल सेक्रेटरी बनाया। उसके आगे अटल जी का जमाना में मिनिस्टर बनाया।
उसके आगे लीडर ऑफ द पोजिशन वो भी बनवाया। तो इसलिए उनका ये चीज बाकी था, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। उसके अलावा बाकी पार्टी में जितना भी दे सकते हैं सब दे दिया उनका। प्रखर और ओजस्वी वक्ता, प्रभावी पार्लियामेंटेरियन और कुशल प्रशासक मानी जाने वाली सुषमा स्वराज एक वक्त सबसे लोकप्रिय वक्ता थी। सुषमा स्वराज बीजेपी की एकमात्र नेता हैं जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों से चुनाव लड़ा। वे भारतीय संसद की ऐसी अकेली महिला नेता रही जिन्हें असाधारण सांसद चुना गया। वे किसी भी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता भी थीं। 4 दशक के लंबे बेदाग राजनीतिक सफर के बाद उन्होंने तबियत खराब होने पर खुद को सक्रिय राजनीति से अलग कर लिया और 2019 का आम चुनाव नहीं लड़ा। भारतीय राजनीति की इस प्रखर, ओजस्वी और कद्दावर नेता का 6 अगस्त 2019 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुशल प्रशासक, दूरदर्शी सुषमा स्वराज ने जो भी मंत्रालय संभाला उसमें उच्च मानक स्थापित किए। बतौर विदेश मंत्री उन्होंने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत छवि बनाई, बल्कि अनेक देशों के साथ भारत के संबंधों को सुधारने में अहम भूमिका निभाई। विदेश मंत्रालय के साथ ही सुषमा स्वराज ने जितने भी मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली, उनमें अपने काम करने की शैली से लोगों का दिल जीतती रही। विदेश मंत्री के रूप में वो हमेशा विश्व के किसी भी कोने में परेशान भारतीयों की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी। जो दूर देश में बैठा हुआ है उसके लिए एम्बेसी एक घर होना चाहिए। उसके लिए एम्बेसी उसके संकट निवारण का एक स्थान होना चाहिए। और एक घोष दिया मैंने, हर देश में आपका दोस्त भारतीय दूतावास। अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंस गए हैं तो वहां भारतीय दूतावास आपकी मदद करेगा। मुस्कुराते हुए अपने देश के नागरिकों के लिए हर पल मदद को तत्पर रहने वाला आवाज जाएगा नहीं, बल्कि सबकी चहेती पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का था। मोदी सरकार में सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्रालय का दरवाजा जिस तरह देश विदेश के भारतीयों के लिए खोला, वो अभूतपूर्व कदम था जो हमेशा याद किया जाएगा। 2014 में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल ने उन्हें सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो विदेश मंत्रालय का कार्यभार सौंपा। बीजेपी ने इस तरह इंदिरा गांधी के बाद दूसरी और अपनी सरकार में पहली पूर्णकालिक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को चुना। सुषमा स्वराज ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भाषण दिया था और उस दौरान जमकर पाकिस्तान पर गरजी थी। तब उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवादियों की फैक्ट्री कहकर संबोधित किया था। भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। बतौर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ट्विटर पर भी काफी सक्रिय रहती थी। विदेशों में फंसे लोग ट्विटर के जरिए सीधे उनसे मदद मांगते तो वो भी व्यक्तिगत रूप से सक्रिय हो जाती। हर भारतीय की मदद के लिए चाहे पासपोर्ट बनवाने का काम ही क्यों ना हो, वो किसी को निराश नहीं करती। उनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि विदेश मंत्री रहने के दौरान सुषमा स्वराज का नाम ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली विदेश मंत्री के तौर पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और उनके निधन तक उनका ये रिकॉर्ड कायम रहा। सुषमा स्वराज केवल भारतीयों के लिए ही नहीं, पाकिस्तानी और बहुत से विदेशियों के लिए मसीहा रही। 11 अक्टूबर 2017 को पाकिस्तानी महिला नीलिमा गफ्फार का भारत में इलाज करने के लिए उन्होंने तत्काल वीजा जारी कराया था। वही गलती से पाकिस्तान पहुंच गई मूक बधिर युवती गीता की 10 साल बाद वापसी कौन भूल सकता है, जो सुषमा स्वराज की वजह से ही संभव हो पाई थी। 26 अक्टूबर 2015 को जब वो वापस लौटी तो सुषमा स्वराज ने उन्हें भारत की बेटी कहा था। साल 2015 में ही यमन में जब हूथी विद्रोहियों और सरकार के बीच जंग छिड़ गई और वहां हजारों भारतीय फंस गए थे,
उस दौरान यमन में फंसे भारतीयों ने मदद के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से गुहार लगाई। सुषमा स्वराज ने ऑपरेशन राहत चलाकर यमन में फंसे 4000 से ज्यादा भारतीयों को खतरनाक रेस्क्यू करके बाहर निकाला था। सुषमा स्वराज ने दक्षिण सूडान में गृह युद्ध में फंसे भारतीयों की सुरक्षित देश वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीयों की मदद के लिए ऑपरेशन संकट मोचन चलाया था। इसके अलावा लीबिया में भी जारी गृह युद्ध के दौरान 29 भारतीयों की सुरक्षित वापसी में सुषमा स्वराज ने अहम भूमिका निभाई। विदेश मंत्री में तो देखिए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ज्यादा उसमें लेते हैं, लेकिन इनको जो भी काम करना, जो ट्वीट करना, जो जो करना था इनका काम, वो लोगों से मिलना, वो पर्सनल रिलेशनशिप, इसी से आपको पता होता कि उनका रिलेशनशिप क्या था। इराक में जब आतंकी संगठन आईएसआईएस ने 46 भारतीय नर्सों को बंधक बना लिया था, तब उस वक्त की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इन भारतीय नर्सों को वहां से बाहर निकालने में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कवायद की और तब तक शांत नहीं बैठी जब तक सारी नर्स भारत सकुशल वापस नहीं लौट आई। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, जिसे पाकिस्तान को सुषमा स्वराज के लिए खोलना पड़ा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पहली बार पाकिस्तान ने सुषमा स्वराज की फ्लाइट को किर्गिस्तान जाने का रास्ता दिया। बतौर विदेश मंत्री 2019 के आम चुनाव से पहले उन्होंने विदेशों के कई अहम दौरे किए, जिसमें आतंकवादी मसूद अजहर को बैन कराने के लिए चीन का दौरा भी शामिल था। सुषमा स्वराज के प्रयासों का नतीजा था कि मसूद पर चीन के बार बार अड़ंगा फंसाने के बावजूद 1 मई 2019 को आतंकी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया था। 29 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र में दिया गया सुषमा स्वराज का भाषण खूब चर्चा में रहा। इसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को परिवार के सिद्धांत पर चलाने की वकालत की थी। सुषमा स्वराज 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गई थी। इसी दौरान उन्होंने लोकसभा में चल रही डिबेट के लाइव प्रसारण का फैसला किया था। 1998 में सुषमा स्वराज को सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ ही दूरसंचार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। उनके इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय फिल्म को एक उद्योग के रूप में घोषित करना रहा, जिसके बाद भारतीय फिल्म उद्योग को बैंकों से कर्ज मिलना शुरू हुआ। साल 2000 से 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो फिर सूचना प्रसारण मंत्री बनाए गए और बाद में 2003 से 2004 तक उन्हें स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया। एम्स के विस्तार का श्रेय भी सुषमा स्वराज को दिया जाता है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के एम्स का कायाकल्प और देश में इसी तर्ज पर 4 और एम्स के निर्माण की प्रक्रिया की पहल भी उन्होंने ही की। देश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आने वाली पीढ़ियां उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हमेशा प्रेरणा लेती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ नेता, कुछ वक्ता, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो देश ही नहीं पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लेते हैं, और ऐसा ही व्यक्तित्व की धनी थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जब बोलती थी तो सब थम जाता था। उन्हें सुनने वालों को लगता था कि वो बोलती रहे और सब सुनते रहे। संसद से संयुक्त राष्ट्र तक उनके भाषण जहन में हमेशा ताजा रहेंगे। तू इधर उधर की ना बात कर, ये पता नहीं। भारतीयता को अपनी आवाज और भाषा में पिरोई सुषमा स्वराज जब बोलती थी तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। ताजगी, जोश, उम्मीद और ऊर्जा से लबरेज उनकी वाणी, ऐसा लगता था मानो नए भारत की आवाज और पहचान है। We live by the credo of
Excuse me. Just Namaskar. Welcoming all the illustrious luminaries and our respectable dignitaries on the Stree Forum 2023. I, Dr. Surbhi Vaishmittal, welcome you all to this auspicious and solemn occasion when we are commemorating the 5th Punya Tithi of Srimati Sushma Swaraj ji, a legacy in her own. I request all the mute themselves, please. Hello. Request you to mute. Yeah, I'm extremely sorry. There was a slight technical glitch, so we'll just resume out here. So this is a special tribute to Sushma ji. We are just playing it out. Just a moment. हो जाया करते थे। ताज की जोश, उम्मीद और ऊर्जा से लबरेज उनकी वाणी, ऐसा लगता था मानो नए भारत की आवाज और पहचान है। We live by the credo of Vasudhaiva Kutumbakam, a Sanskrit shloka, which means the world is one family. But seldom have I drawn greater joy from my duty as India's External Affairs Minister, opening the doors to our global family as I do today, which happens to be a bright sunny day. भारतीय परिधान और उनके माथे की बड़ी सी बिंदी उनके शान, मृदुल और सरल व्यक्तित्व को और निखार देती थी। जब भी भारत की सोच और नीति पर उन्होंने अपनी बात रखी, तो इस ओजस्वी वक्ता ने पूरी दुनिया को सम्मोहित कर लिया। शायद इसी वजह से वो बीजेपी की पहली महिला प्रवक्ता बनी। संसद में विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी की पहली पसंद सुषमा स्वराज ही होती थी। मनमोहन सरकार के दौरान नेता विपक्ष के तौर पर उनका ये भाषण यादगार है। आप इस देश के मुखिया हैं, आप इस सरकार के मुखिया हैं। अब जिससे काम नहीं चलेगा कि उसने कर दिया होगा, उसने कर दिया होगा, मुझे कुछ नहीं पता। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल किया। संसद में दिए गए उनके कई भाषण यादगार रहे। 1996 में अटल सरकार विश्वास मत हार गई थी। उस दौरान अटल जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था, तो सुषमा स्वराज ने भी जनादेश के महत्व पर यादगार भाषण दिया। दूरदर्शन के सामने जीवन प्रसारण देखने वाला हिंदुस्तान मतदाता संयुक्त राष्ट्र में उनके भाषणों ने वो प्रभाव छोड़ा कि आतंकवाद के खिलाफ सभी देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार थे। संयुक्त राष्ट्र में दिया गया उनका भाषण उनकी चुनिंदा भाषणों में शुमार किया जाएगा। पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया, तो सुषमा स्वराज ने बलूचिस्तान
हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। सबसे पहले तो विदेश में भारतीयों की स्थिति पर उन्होंने हमेशा सधे हुए शब्दों में संसद में जवाब दिया और अपने मंत्रालय के कामकाज के बारे में जानकारी दी, चाहे वो इराक में फंसे भारतीयों का मामला हो या कुलभूषण जाधव का मामला। पाकिस्तान श्री कुलभूषण जाधव को उनकी मां और पत्नी से मुलाकात को ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर के तौर पर दिखा रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मानवता और सद्भाव के नाम पर हुई इस मीटिंग में मानवता भी गायब थी और सद्भाव भी गायब था। इस मीटिंग में तो केवल जाधव के परिवार वालों के मानवाधिकारों का उल्लंघन पर उल्लंघन ही हो रहा था और उन्हें भयभीत करने वाला एक वातावरण वहां पैदा कर दिया गया था जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्ण विश्वास से कहती, मुझे पूरा भरोसा है कि ये समूचा सदन और इस सदन के माध्यम से भारत के समस्त लोग एक स्वर से पाकिस्तान के इस अत्यंत अशिष्ट व्यवहार की पुरजोर निंदा करेंगे और श्री जाधव के परिवार के साथ हार्दिक सहानुभूति प्रकट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में अगर उनकी हिंदी भाषा सबको प्रेरित करती थी तो 2002 में पाकिस्तान के PTV को दिए इंटरव्यू में उनकी उर्दू भाषा पर पकड़ दिल खुश कर देती है। इस साक्षात्कार में सुषमा जी ने पाकिस्तान का दिल जीत लिया था। जो हिंदुस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को कही, मिसाल के तौर पर हम लोगों ने एक लिस्ट दी है, जिसे कहा है कि उस लिस्ट के लोग आप हमें दें। हम लोगों ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में कमी आए, इन्फिल्ट्रेशन जो घुसपैठ हो रही है हिंदुस्तान में वो कम हो। सुषमा जी संस्कृत में भी निपुण थी और कई मौकों पर उन्होंने इस भाषा पर अपनी राय रखी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे। उनका दिया गया हर भाषण प्रेरित करने वाला है। ये उनके व्यक्तित्व का ही करिश्मा था कि सभी राजनीतिक दलों के लोग सुषमा स्वराज की तारीफ करते थे और उनका सम्मान किया करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। Namaskar, hello and welcome to this very solemn occasion commemorating the 5th Punyatithi of Srimati Sushma Swaraj ji. And what we were watching was a small tribute of her whole lifespan, her whole work, which made her one of the most lovable public leaders of the country. तो सुषमा जी के वृहद व्यक्तित्व को समर्पित यह छोटा सा बायोपिक हम लोगों ने देखा, and by way of this we paid our humble tributes to the departed leader. And at Rethink India, what we felt was the index of Stree Shakti, what Sushma ji represented was something which was so distinctively different. सुषमा जी ने विश्व महिला दिवस के एक अपने अभिभाषण में 2013 में कहा कि there is only one day for women in the Western thought process. जब आप महिलाओं को ग्रीट करते हैं and rest of the 364 days you try to beat us. So that was the kind of hilarious and very firm message what Sushma ji gave. एंड पुण्यतिथि किसी भी व्यक्ति के जीवन का फुलफिलमेंट डिपिक्ट करती है, एक ओजस्वी और तेजस्वी वक्ता के साथ, as we saw that she had that empathetic motherly heart, and it was talked so very well in the annals of the Ministry of External Affairs that she was not the minister per se, she was actually the mother of that ministry. और भारतीय परिवेश में तो माता का स्थान जो हम जानते हैं और परंपरा में हम लोग उस सभी को अनुभव करते हैं, इट्स वे 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 बियॉन्ड
even the institution of the father. So at Rethink India, we instituted the Srimati Sushma Swaraj Stree Shakti Samman. And it had one of the other focuses that Indian feminism per se in a global context, and at a time when the G20 presidentship is with our country. And we just had the G20 Empower Summit. It got concluded in Gandhinagar, Gujarat. Indian feminism is way different. It is way distinctive from what the West has actually seen it across. And we curated a very elaborate framework to bring about those very significant elements of the Stree Shakti, as we call it. And Stree, as we have chosen to enumerate, is the serene, tenacious, reverberating, enchanting, and empowering Shakti. And I would request our president, Dr. Surbhi Vash, to further entail this index of Stree Shakti, which we threw out as a challenge, as a entrance, as a qualifier for bestowing upon this coveted honor on a handful of very distinguished Stree Shakti from all over the country, from various walks of life, and who have really displayed. And in fact, each and every submission of ours we were reviewing, and it was so very tough. Each and every submission is perhaps a kind of a doctorate in itself, and we might have to come with a kind of a booklet. The manifestations, what has happened in the Stree Shakti framework, is something worth devouring. Each of the submissions what we have received. Before we come to the recognition part, I would request Dr. Surbhi to read out from the screen itself, as we have tried to, because recognition is one part, but किस बात के लिए हम recognize कर रहे हैं, उसका जो गूढ़ तत्व है, एक जो उसकी अभिव्यंजना हुई है. So I would request Dr. Surbhi, the president of Rethink India Institute, to further enumerate. And this is a kind of a celebration. This is the way we really commemorate a personality, a gigantic personality, and somewhere or the other, बात वही है कि जो इष्ट है, जिसके नाम से हम आपको सम्मानित कर रहे हैं, उसका जो तत्व है वह हमारे अंदर भी विद्यमान हो सके, यही एक आकांक्षा, एक अभिलाषा रहती है. ओवर टू डॉक्टर सुरभि. Namaskar. The Stree Forum platform and a forum which we convene each year, and we have dedicated this forum to Srimati Sushma Swaraj, who represents Indian womanhood in so much completeness and galore and grace, you know. So Stree, as we say, serene, tenacious, reverberating, enchanting, and empowering. The spirit of Stree Shakti, essentially we have listed down the attributes of stateswomanship, valor, grit, purity, fidelity, simplicity, austerity, humility, affection, teaching, dignity, commitment, chastity, patriotism, sacrifice, courage, devotion, forgiveness, goodness, sincerity, and compassion. The Indian, रूप में celebrate करता है, and the mother, the Jagjanani, the Durga, the Mahakali, the Mahalakshmi, Mahasaraswati, you know, she's the epitome of compassion and power at the same time. So in this 2023 edition of Stree Shakti Samman, we remember the great words and leadership of Srimati Sushma Swaraj ji, who, as a woman leader, represented India at the global forefront. And she has the complete, the Stree Tattva, the Adhyatmik Tattva of Krishna, and the Stree Tattva of divinity, power. So we could find no better icon to represent in all its completeness and galore the power of Stree Shakti than Srimati Sushma Swaraj. An ode to her today, to her being, to her existence, to her entire persona, and her life achievements in this forum today. Thank you, Dr. Surbhi. Thank you for introducing the entire facets, what we have tried to bring about in all our bodies this afternoon, this very solemn occasion. And one very important aspect which we went out was the contrasting aspects of it. Males can go away with becoming one-sided
personalities, but Stree Shakti is something, is someone which have to balance it across. If you see on these two flanks, and this was the most critical, and what we received the submissions which were really original and which really expressed the personalities of all our nominees. How to balance out the spirituality replete with divine devotion and stateswomanship smeared with arrogance, tinged anger and ruthlessness. इन दोनों का समत्व कैसे किया जाए, यह है भारतीय स्त्री शक्ति, जिसकी एक अधिष्ठात्री देवी के रूप में सुषमा स्वराज जी ने अपना स्थान प्राप्त किया. How to balance out toughness of courage and softness of compassion. Now, this is what this balancing out, this is the toughest part, and that's where all our awardees today, they have really displayed that higher dimension of it all. Hard work and humility, austerity vis-a-vis astuteness, exercise of intellect and courage in professional word vis-a-vis sublimely forsaking talents for the greater benefit of raising a family. We have very eminent stories in all the submissions what we have received. That's what Stree Shakti is all about. Existence distilled in the depths of mind and heart vis-a-vis flaunting the freedom of ordinary, balancing out the rights and responsibilities in the context of variegated socio-professional roles, and handling conflicts, struggles, challenges, doubts with elegance and style, living life with truth, beauty, courage, and divinity. So that is where what we call in the Rethink India parlance, that it is the superior status of womanhood. Bharatvarsh Matra Shakti ke hi adhishthan mein rehta tha. There was a long, horrendous past which we had, the colonial past as we can call, where our own self-image got destroyed, it got colonized. But somewhere or the other in our civilizational consciousness, नारी तू नारायणी का जो भाव है वह केवल पूजने तक नहीं था. आज भी हमारे rural and remote areas में, in our traditional families, we can see that the paramparas, the conventions which are all out there, they have that, I would say, tinge of giving that power, that empowerment to the Stree Shakti. Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali, all are the Trinity is all represented by the Stree Shakti. The entire Daivi Sampada in the entire Srimad Bhagavad Gita, what Sri Krishna entailed on the battleground of Kurukshetra, it has all that Daivi Sampada coming out from the Stree Shakti out there. So without any further ado, we move on to the very important part of this commemoration, cheering up, really paying our tributes to the Stree Shakti this afternoon, which have really come forward and submitted in very, very elaborate aspects out there. I would request Dr. Surbhi to please dial in Madam Bhupendra Gogia. She is traveling in the remote corners of Himachal Pradesh, going to meet one of her employees. So she was the first one to come with her very, very elaborate nominations from Ludhiana St. Paul School. So Dr. Surbhi, please dial her. We will take her on the telephone call, and then we will move on with all our attendees on Zoom call. So we welcome each and every awardee of ours this evening. We have institutional awardees as well as we have individual ones which we would like to recognize this afternoon. I'm just yes. Just a minute. Ma'am, I'll do a WhatsApp call, or is connection is weak, or I think this is fine. Ma'am, you may please speak. Madam Bhupendra Gogia is online with us. Okay. So as a with the school, Ludhiana, Punjab. Madam is with us. Ma'am, you may kindly speak now. Yes. Thank you so much for the felicitations. It means a lot. I must tell you that when I applied for the application, it was a lot of reflection. The questions are so good that you really reflect on where your life is going, what are you doing, and what you need to do ahead. So thank you so much for the honor, and I really wish I could come on the Zoom call. Thank you so much. Most welcome, ma'am.
Thank you for joining us from your travel schedule. Right. Connect to you, ma'am. Thank you, ma'am. Most welcome. So technology has been a kind of a panacea, has been a kind of, I would say, empowering us all that we can connect out there. Ma'am was traveling, as I told, in the remote parts of Himachal, and we said we will take you on the call. She's going to meet one of our first employees of our schools at Paul Mittal School. There was some happening in their family out there. So that is the Stree Shakti. So this is Stree Shakti in action, the empathy part of it all. Out of all considerations, she's taking all the trouble to visit the house in remote and rural Himachal Pradesh out there. So we really salute the spirit of Stree Shakti in Madam Bhupinder Gogia. Moving forward, we would now like to acknowledge and recognize the phenomenal effort of bolstering the Stree Shakti, bolstering the future Stree Shakti, replete in all 360 dimensions at Scottish High International School, Sector 57, Gurugram. Their entire submission, of the institutional submission, what we witnessed, is replete with innovative designs out there. And just to make these learnings, these experiments, these innovations which are going on to empower the Stree Shakti, we would be posting post this event the entire nominations down at a very special link, so that we can all take advantage of what is being done at different institutions and what is being done by different individuals. Dr. Surbhi, please invite. We are joined by Sanjay Sachdeva, sir, the Honorable Principal from Scottish High International School. I would request sir to kindly come on camera and speak a few words and share your thoughts. Request him to accept this token tribute from this August forum formally and grace us with and also tell us in his own words as to how Stree Shakti is being bolstered at this lovely educational institution. Sanjay Sachdeva sir, and Isha Verma ji is also there from Scottish High. Good afternoon. Good evening, everyone. I'm right here. My camera is facing some major problems, though I'm right here. Okay. Please share your thoughts. We would like to just hear if you would want to speak a few words or sentiments on this. Sachdeva sir had joined in, I think. Yeah. A few words on my school, or rather than the education system. What would you like me to speak on? Please let me know. Your school, your journey, anything you would like to speak? On my school. He has just left to go, I think. He was. So, Principal sir? Yeah, Principal sir was just here, na? Sachdeva sir? I will just settle myself at a corner and try if my camera is. Yes, surely we'll come back to you. Let's move forward. Okay. Okay, so we would like to confer upon the Srimati Sushma Swaraj Stree Shakti Samman on a very eminent Stree Shakti out here who is gracing this occasion. Professor Ranjana Jha ma'am, who happens to be the head of the Department of Physics at Netaji Institute of Technology, Delhi. Yeah. Request Madam Ranjana Jha to kindly switch on the camera and speak a few words. Ma'am has been there from the very head start. And just a month ago, we were all commemorating the Punyatithi of Madam Curie, the only Nobel laureate who received Nobel Prizes in two distinctive fields, physics and chemistry both. And when we got ma'am's submission and we saw her heading the Department of Physics, one of the very fundamental areas out there, I think the remembrance of Madam Curie just came rushing over there, because physics generally it's considered to be a kind of a male domain, and Madam Ranjana Jha ma'am has really broken that glass ceiling, that proverbial glass ceiling, to really emerge at that level and taken forth that field over there. We would like to bestow upon Professor Ranjana Jha ma'am this token tribute and request her to come and accept this and also grace us. Ma'am Ranjana Jha. सबसे पहले माँ शारदे को नमन है
आदरणीय डॉक्टर सुरभि वैश्य जी, प्रेसिडेंट रीथिंक इंडिया, और आमंत्रित अतिथिगण, मैं इस सम्मान के लिए उनका आभार प्रकट करती हूँ। यह सम्मान मेरे लिए जीवन भर के परवरिश, परिश्रम, परिवार और प्रयत्न का प्रतिफल है। श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति सम्मान पाना मेरे जीवन का सबसे सुखद और गौरवमयी क्षण है। कहा जाता है कि जब एक पुरुष आगे बढ़ता है तो उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। मेरा यह मानना है कि किसी स्त्री का आगे बढ़ना एक परिवार की सोच है। उसकी पिछली 2 पीढ़ियां, उनके प्यारी माँ, आदरणीय पिताजी, भाई बहन, सबसे ज्यादा पति और उनके छोटे बच्चे, जो उन बच्चों का त्याग, परिश्रम, तन मन और धन से सहयोग का परिणाम है। अतः आज मैं सबों का अंतर्मन से धन्यवाद देती हूँ और यह सम्मान मैं परिवार के प्रगतिशील सोच को समर्पित करती हूँ। जहाँ तक मेरी लाइफ है, सोफी मैम ने कहा था कि आप अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगी, तो थोड़ा सा मैं अपने लाइफ के बारे में भी बताना चाहूंगी। कि मैं सबसे पहले अपने शिक्षक के रूप में अपनी माँ को सादर प्रणाम करती हूँ। मेरी पूरी शिक्षा पटना बिहार से हुई। पटना साइंस कॉलेज से मैंने बीएससी और एमएससी किया। मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और शादी के बाद मैंने बीएससी, एमएससी और 2 बच्चों के साथ पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। सबसे पहले मैंने एम्स ज्वाइन किया एज ए जेआरएफ, उसके बाद सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज आईआईटी दिल्ली में पीएचडी का काम संपन्न किया। परिवार और कैरियर दोनों साथ साथ चलते रहे। कारवां आगे बढ़ता गया और समय का प्रबंधन ही मेरे को सफल बनाता चला गया। मेरे बेटे का जन्म हुआ और तब मैंने नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो उसमें मैं डीआईटी था, वहां मैंने ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर। और इंस्टीट्यूट का डीआईटी से एनएसआईटी, एनएसआईटी से एनएसयूटी की यूनिवर्सिटी अब स्टेट यूनिवर्सिटी बन गया है। उसके साथ इंस्टीट्यूट बढ़ता गया, मैं भी उसके साथ साथ बढ़ती गई। लेक्चरर से लेकर के प्रोफेसर तक का और एचओडी, ईस्ट वेस्ट और मेन कैंपस तीनों का यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस सफर में मुझे यह कहते हुए तनिक भी हिचक नहीं होती कि मैंने अपना अथक परिश्रम और कई महत्वपूर्ण ओहदों पर रहते हुए इस दौरान मैंने अपने डिपार्टमेंट के लिए और अपने यूनिवर्सिटी के लिए बहुत काम किया, जिसके चलते हमारा डिपार्टमेंट और हमारा जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे रिसर्च और टीचिंग के कार्य में काफी प्रगति मैंने लाई। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम साथ साथ चलता रहा, रिसर्च भी चलता रहा। उसमें मैं काम करने की इतनी अभिलाषा थी कि मन में यही आता था कि अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। मैंने एमएससी प्रोग्राम की शुरुआत की यहाँ पे डिपार्टमेंट में और लैब का निर्माण किया, रिसर्च लैब फॉर एनर्जी सिस्टम्स, जिसमें आज बहुत सारे बच्चे पीएचडी करके निकल चुके हैं। 10 बच्चे और कम से कम 20 बच्चे वहां पर रजिस्टर्ड होकर के काम कर रहे हैं अपना पीएचडी का काम। मेरा रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो सोलर एनर्जी मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी में है और मैं सोलर रूफटॉप पावर प्लांट और सोलर कार की मैं नोडल ऑफिसर भी रही हूँ। और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सोलर कार को लेकर के मैं बेल्जियम गई थी पार्टिसिपेट करने के लिए 11 बच्चों का टीम लेकर के। 29 साल का सफर काफी शानदार रहा। बहुत सारे विद्वान लोगों के साथ मिलने का अवसर मिला। काफी विदेश यात्राएं भी मैंने की इस दौरान। बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे टॉक, पेपर प्रेजेंटेशन, इनवाइटेड टॉक मैंने दिया देश और विदेश में। करीब आधी दुनिया में घूम चुकी हूँ और काफी वहां से सीखने को मिला। बाहर की यूनिवर्सिटी से मैंने स्टैनफोर्ड विजिट किया, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये सारे जितने भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। अभी जापान गई थी मैं थोड़ी दिन पहले। तो इस दौरान मुझे इस
प्रोफेशन में रहते हुए मुझे बाहरी दुनिया से भी काफी संपर्क हुआ और उसको मैंने अपने इंस्टीट्यूट में, अपने डिपार्टमेंट में अच्छी चीजों को लाने की मैंने कोशिश की। 29 साल का सफर बहुत शानदार रहा और लर्निंग प्रोसेस भी हमारा चलता रहा। सब संक्षेप में कहना चाहूंगी कि मेरे नाम से करीब 190 रिसर्च पेपर जो कि जर्नल और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में पब्लिश प्रेजेंट किया मैंने। 35 इनवाइटेड टॉक मैंने दिया। 5 प्रोजेक्ट मैंने अपने इसमें पूरे लाइफ स्पेन में मैंने एग्जीक्यूट कराया है। 7 ये बुक चैप्टर्स हैं। 9 बच्चों ने पीएचडी डिग्री प्राप्त कर ली है और 8 बच्चों का भी अंडर प्रोसेस चल रहा है। रिव्यूअर भी मैं कई इस जर्नल्स में रही हूँ और 25 अवार्ड अभी तक मुझे मिल चुके हैं, जिसमें कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, रिसर्च अवार्ड, एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड, इंडियन 100 वुमेन आइकन अवार्ड भी इसमें शामिल है। और भी इनके अलावा बहुत सब हैं, लेकिन कुछ प्रमुख यही हैं। बहुत सारे ऑनर्स और रिकॉग्निशन मिले। बहुत सारे इंटरनेशनल कमिटीज में, रिसर्च फोरम पे मुझे आमंत्रित किया गया। कई खट्टे मीठे अनुभवों के साथ सिलसिला चलता रहा। कई मुकाम पर अड़चने भी आई, लेकिन मैं नदी की तरह अनवरत आगे बढ़ती रही। इस बीच बच्चे भी बढ़ते चले गए। मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर प्रियंका झा ने मेडिकल की पढ़ाई की और वो अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में एसोसिएट प्रोफेसर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में है। दूसरी बेटी मेरी डॉक्टर निहारिका झा, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, दिल्ली में प्रैक्टिस करती है। सबसे छोटा बेटा मेरा सैन फ्रांसिस्को में रैड एआई में मशीन लर्निंग इंजीनियर है। और तो परिवार और करियर के बीच सामंजस्य बिठाते हुए मैं अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपनी शैक्षणिक जिम्मेवारियों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करती रही और आगे भी करती रहूंगी। यह सम्मान मेरे लिए आगे और काम करने के लिए अनवरत प्रेरित करता रहेगा। सबों को नमस्कार एवं धन्यवाद। Beautiful. नमन इस कहते हैं कि इस व्यक्तित्व को कि और मैडम ने जो एक मोटिव यूज किया कि नदी की तरह जीवन मेरा आगे बढ़ता रहा। सो दिस इज द क्विंटेसेंस ऑफ द स्त्री शक्ति की परिवार का जो इतना बड़ा दायित्व है उसके बाद भी इतना जो सर्वांगीण स्थान प्रोफेसर रंजना झा मैम ने प्राप्त किया और उसके अपनी सक्सेस के साथ साथ उनके जो परिवार के लोग हैं। और मैं ऐसे समय पर आई वुड लाइक टू इनवाइट her daughter who is joined in डॉक्टर निहारिका झा कि वो आए और अपनी माँ के विषय में 2 शब्द यहाँ बोले उनके इस सम्मान के विषय में और क्या उनका अनुभव रहा अपनी माता को लेकर। तो डॉक्टर निहारिका झा, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू कम ओवर एंड स्पीक अ फ्यू वर्ड्स आउट हियर। You have to unmute yourself, Dr. Niharika. Yeah. You have to unmute, ma'am. Yeah. Problem with the volume, not audible. Yes, yes. Okay. Ma'am, you need to check the volume. I think something in the system. Maybe. Maybe we will come back to you. You just log in and log out once so the volume gets corrected that way. We would go back to the land of Valor. We would like to confer upon Srimati Sushma Swaraj Stree Shakti Samman on yet another very illustrious and young dynamic personality who is in fact administering the Subharati Vivekananda University located at Meerut, Dr. Shalya Raj. She's the CEO of the university there. Pardon? Madam is the CEO, leading the Chief Executive Officer of Subharati Vivekananda University.
Dr. Surbi, a few words perhaps about Dr. Shalya Raj and your whole experience regarding her entire team in the whole nomination process. Over to you. Yeah. So, Dr. Shalya Raj, as I have, heard from and read through the submissions, a very determined and a very, very prolific personality, and nationalistic in forward her university which she leads. And I was always in touch with Dr. Tushti Sharma, faculty from the university, and always greeting with this Jai Hind, ma'am. And I can see the spirit of Dr. Shalya Raj reverberating in her staff and in her university members. That's so very boisterous and very determined at the same time. So it's all reflected in each and every aspect. And I can watch the pendle of Radha and Krishna, what Dr. Shalya Raj is wearing in her photograph out here. एंड यहाँ पर जो हमने साइटेशन पर भी लिखा है सुषमा स्वराज जी के व्यक्तित्व में, वो श्री कृष्ण की बहुत अटूट भक्त थी. उन्होंने इसी कारण से अपनी बेटी का नाम भी बांसुरी रखा. भगवान कृष्ण के प्रति मेरा संपूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास है, इसलिए मैं ना कभी विचलित होती हूँ, ना धीरज खोती हूँ. ये उनका एक वक्तव्य 2018 में उन्होंने दिया. समवेयर और द अदर फेथ, the fountainheads of faith is somewhat which makes our Stree Shakti so very determined. So just over there, I would request Dr. Shalya Raj to come in, accept this to contribute from this forum and also address out here. Dr. Shalya Raj. Thank you so much. And thank you for the beautiful and kind words with which you have introduced me. I am honored to be recognized and I'm honored to get the award. First of all, I really congratulate you that you've chosen Sushma ji for the naming of the award. It is an honor that to get any award which is named after her, because she herself was such a beautiful personality, inspiring all us ladies who are working in any small aspect to get a change in the society. So it's beautiful and wonderful to be here today. My university's motto is Shiksha, Seva, Sanskar and Rashtrata. So that is why we are working on the same lines, and all of us greet each other and anyone we meet with Jai Hind, because that is one thing which we feel that as soon as we greet each other with Jai Hind, it inculcates in you and it reminds you that yes, your first duty is towards your nation. So Jai Hind to all present here, and congratulations to all my fellow women who won this award. And thank you to the organizers for choosing me. I've been working in different fields, not just education, and I've been bringing my university on different platforms. We've been doing social service in lower trodden areas and also in different areas of education. We have a hospital, we have education sector, we have social service sectors. So we've been working in all those areas. I'm thankful to my team who is always with me. Pardon? No, someone just spoke. Okay. Please carry so on. I'm thankful to my team, not just in my office, also to my family members who always support me and always are standing with me in all my ventures and pushing me forward. Even when I get demotivated or tired, they push me forward that I should go ahead and achieve something. So I will just give you one small example that Swami Vivekanand Subharati University. So we named the university after a great man. Also Subharati means Subhartiye, a good Indian. So that's how much nationalism has been inculcated in all of us by the founders of the university, of the whole group. Subharati is actually a whole group, which is not just in education. So it's been made by the founders and been made such that all of us be nationalists first, do something for the country, and then do something for ourselves. So that's how it is. And thank you for the recognition. A pat on the back always makes you feel to go further and further ahead. Thank you for the recognition. I assure you
that we'll keep doing wonderful work and keep taking this more and more forward. And you will find us worthy of giving us more and more awards in future. Thank you. Jai Hind. Dr. Subhi. Jai Hind, Dr. Shailraj ma'am, and it's so lovely that to hear her exhortation replete with as I said, determination and the fiery valor of Sushma Swaraj is reflected very much in your persona, and coupled with the softness and compassion and nationalism indeed. So very many congratulations, and we really have great hopes and great expectations from your university and you. So thank you so much for gracing the माँ floor. भारती की सेवा को समर्पित सुभारती विवेकानंद विश्वविद्यालय की मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर शल्यराज, और हम आशा करते हैं कि उन्होंने जो स्त्री शक्ति के इंडेक्स का जो परिचय अपने नॉमिनेशन में दिया, वो इतना सशक्त है। उसकी बुकलेट हम उनको प्रस्तुत करेंगे, डिजिटल बुकलेट, और उनके विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली सभी स्त्री शक्ति उसका अनुसरण करें। इस माध्यम से यह भी एक आशा और अभिलाषा रहेगी, बिकॉज द होल एस्पेक्ट इज लेट दिस कल्चर, दिस कंटेजियन ऑफ एक्सीलेंस, इट शुड रिवर्बरेट ऑल अक्रॉस। और यही एक मूल बात है कि लीडर्स शुड प्रोड्यूस मोर लीडर्स, और मातृशक्ति से बड़ा तो नेतृत्व कौन ही प्रदत्त कर सकता है। हमने 24 मिनट का जो सुषमा जी के बृहद व्यक्तित्व का जो एक स्मॉल बायोपिक वीडियो देखा, तो लिटिल लेस देन द प्राइम मिनिस्टर, दैट वाज द होल परपोर्ट ऑफ इट ऑल। ऐसा एक जो टाइटैनिक पर्सनालिटी हमारे इस देश में वो रही, और उसका हम आज एक उनको रिमेम्बर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शालिराज, इट वाज रियली अ प्रिविलेज एंड ऑनर on the part of Rethink India to really being able to felicitate you. We have got the entire Jha family. Before I come to the other illustrious personalities this evening, Nivedita ji is back, and perhaps other daughter Rita ji wants to speak something about Professor Ranjana Jha, क्योंकि आपका ही जो पुत्र या पुत्री और आपके ही एसोसिएटेड लोग जब आपकी अनुशंसा प्रशंसा करते हैं, उसका आनंद ही कुछ और है, और वही सार्थक है। भारतवर्ष में गुरु, शास्त्र और साधु त्रयी की परंपरा है, इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं है। सुषमा जी के बारे में एक बात कही जाती थी, गवर्नर स्वराज अपने ट्विटर हैंडल पे बहुधा लिखा करते थे कि कुकर की सीटी के साथ में सुषमा जी किसी एक एनवॉय के साथ संभाषण कर रही है। तो यह सहजता, ये भारतीय स्त्री हमारी माताओं में ही विद्यमान हो सकती है। उनके लिए कुकर की सीटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की to talk to a global envoy out there. So let me invite the Jha family, whosoever wants to come and celebrate the persona of Professor Ranjana Jha. They are most welcome, because this is the occasion to really pay your formal tribute to your own mother, to your professor, to whom you have loved and seen out there. So I will not take much of the bandwidth over. Whosoever is there, please come. Nivedita ji, Rita ji, you expressed. Sure. This is Rita Jha, and I am sister of Professor Dr. Ranjana Jha, and hope I am audible. Yes, Very ma'am. much loud. Thank you. Thank you for giving me this opportunity to say some few lines for my sister, Dr. Ranjana Jha. And I should say that we are incredibly proud that she is felicitated today with this honorable award. Her multifaceted personality, dedication, and hard work has achieved her this milestone. Her journey is marked by exceptional qualities such as determination, resilience, passion for learning. She tirelessly has pursued her academic goals, consistently striving for excellence in field of teaching and research. Despite facing challenges, her unwavering commitment, her rigor, compassionate ability to balance between her family and professional responsibilities, her creativity, her leadership skills, her genuine desire to educate and inspire others, and giving, and most important, giving back to the community. This has earned her this award, I should say. I wish her the best as she tirelessly moves forward and upward, breaking the glass ceiling every day. She is a trailblazer and a model for and an inspiration for all of us.
thank you. Thank you for bestowing this honorable award on her. It's a tribute for her, all her hard work. Thank you. What a tribute coming from a sister, affectionate sister. I think this really vindicates all the claims, all the great work what Professor Ranjana Jha has really come up to. If Niharika ji has come over, we would request her to come and also speak a few words about her mother. Yeah, Niharika ji is with us. Okay, we are not able to hear you still. Can you just ring up Dr. Surbhi's number, Niharika ji? We will take your video from Zoom and your voice on the phone. Just dial 99-100-50-597. 99-100. Yeah, I will just write in the chat. Yeah. Hello. Yeah, I'm just putting you on speaker, please. I'm putting you on speaker. Yeah. We have Madam Niharika Jha with us on call. Ma'am, you're on speaker. You may kindly speak your. We'd like to hear you, please. I'm really sorry. I think there's some problem with my system. मेरी आवाज अच्छे से जा नहीं पा रही है. ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि मैं रोज अपनी माँ से एक नई प्रेरणा लेती हूँ. मुझे लगता है कि मेरी माँ इतनी सारा उन्होंने अपने लाइफ में अचीव किया है, इसलिए वो हम लोग को भी रोज प्रेरित करती है कि हम भी अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़े. कभी हम परेशान हो जाते हैं या कभी हमें लगता है कि अब आगे नहीं कर पाएंगे, तो माँ को देखते हैं कि लगता है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी उन्होंने इतना आगे अपने मकाम को इतना ऊंचा रखा है, तो हम इतने में कैसे घबरा सकते हैं. तो रोज ही हमें एक नई प्रेरणा मिलती है अपनी माँ से. मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि वो मेरी माँ है और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं उनकी बेटी. तो मैं उनको रोज दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत 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 प्यार करती हूँ. Congratulations. Ati Sundar, thank you so much. What a loving tribute from a doting daughter to her mother. I think this is quite. I think I am also seeing one ma'am, Reena Jha. Would you like to just come in for just a quick moment and then we'll move on to our next awardee? But कहते हैं ना, celebration कभी भी कोई कम नहीं होता. तो जितने लोग प्रतिभागिता कर रहे हैं उनसे अपने व्यक्ति के बारे में सुनना. मैडम रीना झा, if you would like to just come in, please unmute yourself, ma'am. Yeah, please come in. Hello, I would like to congratulate first of all. She's my elder sister as well, and I would like to congratulate her on this big occasion. My heartiest congratulations to Dr. Ranjana Jha on her receiving this honorable award. The entire family is extremely proud of you. And you have not only inspired us as a family, but also many generations of students you have taught. I think it is particularly important to me to mention here your field of expertise in solar and renewable energy, which is an extremely current and critical field. And we can see the global warming, it's happening. And so I think this is the kind of thing she is into it. And I had the opportunity to attend in her conference, which was in Oxford. And I can see the relevance where she comes from. So I wish her best in her life and just go on, keep moving. Yes, we are all with you. Best wishes. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So we move on with our commemoration this afternoon. We have Madam Isha Verma has joined us from Scottish High International School. We started from them, and the institutional effort which they are really making pertaining to the bolstering of Stree Shakti at their institution. I would request them to accept this token tribute and also address the forum. Madam Isha Verma from Scottish High School. Good evening, everyone. It's really an honor to be a part of this award ceremony.
And I congratulate all the winners out here. Scottish High definitely has been a fantastic experience for me till now. It's being my 13th year running in the school. And when I say it's a Stree Shakti Samman, I truly believe that our school management has always given us that respect and familial atmosphere that we continue working here, maybe till probably I would say little more dramatic, but till the end of my life. So my life begins with the school, and in 13 years of my life, wherein I joined as a normal French teacher, got promoted to a foreign language coordinator, followed by head of the Department of Foreign Languages. Thereafter was chosen as the middle school coordinator, and now I'm heading the senior school. So grade 6 to 12 is under me, and I am a proud member of Scottish High International School. My special thanks to my mentor, Dr. Commander Kartike Saini, Mrs. Bhaktawar Saini, who have really helped me out grow as a person and as a professional in the school. I really thank you all for this honor for my school, and looking forward to receive it soon. Thank you so much, everyone. Dr. Sulbi, yeah. Lovely, Isha ma'am. It's so heartening to hear your thoughts on and how the school environment is fostering the Stree Shakti and empowering and enabling, and it's all there in your words, in your speech. And we wish you all the success and more success in years to come, and loads of joy in your endeavor to serve the students and the school. It's really heartening to hear your enthusiasm. It's infectious. Thank you so much. And needless to mention, the school principal, Dr. Sanjay Sachdeva, who has always been a pillar in handling all the Stree Shakti in the school. So again, thank you so much, everyone. Thank you. The testimonial coming in from Isha ma'am, it substantiated all 30 long years and the aspiration to continue lifelong. That is something which really vindicates it all, this honor over there. Thank you so much. And we really wish Scottish High School to really achieve further and further heights in bolstering the Stree Shakti of India. Thank you so much, Isha ma'am. Moving forward, we have a special request from Dr. Sharma ma'am, who would really like to speak out a few words about Dr. Shalyaraj ma'am. So other participants, we are really, please bear with us. We will give time to everyone. So Tushti Sharma ma'am, please. Jai Hind, everyone. Rethink India and Dr. Sulbi, I'm so thankful for you. This is Dr. Tushti Sharma from Swami Vivekananda Subhati University. And I would like you all to meet our inspiring young CEO ma'am, a dynamic and intelligent lady. She is Dr. Shalyaraj. When she shared her nomination script with us, I couldn't resist telling her that the voluminous collection of words about her we felt in blood and flesh. She is a social activist at her core. She strives to make a positive impact on society and leads with a benevolent heart. I'm really proud of you, ma'am. Through her visionary leadership, she empowers in us, her team, to create a meaningful change and embodies the essence of compassion and empathy in the business world. She is just not a CEO of the Swami Vivekananda Subhati University, she is a leader. Her relentless drive and passion for making a difference set her apart as a role model for aspiring leaders everywhere. And we have students in the university from India and international, and they all proclaim the greeting Jai Hind. And I take it as a proud to take the greeting Jai Hind because I am born in an independent India. A common greeting could be shared at any platform, anywhere, at any time of the day. But I'm proud to be an Indian, born to be an Indian in an independent India, and I'm proud to say Jai Hind. Thank you, ma'am. Thank you so much. So Jai Hind, Tushti ma'am. Indeed, it's you have exemplified the submission which has come in the nomination in your words, and duly validated the stage the women status which Dr. Shalyaraj has really created at her institution. Thank you so much. Moving forward, we would now like to felicitate a very, very special personality out here who happens to be the member of the Madhya Pradesh Council for the Child Protection Right.
स्त्री शक्ति की जो पूर्णता है, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से अभी हमारा तादात्म्य हुआ। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि पश्चिम में नारी का जो आदर्श है वह पत्नी होने का है, और भारतवर्ष में पूर्व में नारी का जो सर्वोत्कृष्ट आदर्श है वह माता होने में है। और माता हो और बालकों की रक्षा, सुरक्षा, उनके संस्कार, शिक्षा की बात ना हो, वह संभव ही नहीं है। प्रियांक कानूंगो जी के तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष का जो एनसीपीसीआर एक बहुत विशद आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है चाइल्ड राइट्स को लेकर, एक बहुत ही प्रोएक्टिव, इनोवेटिव, उसी अभियान को बलवती करती हुई डॉक्टर निवेदिता शर्मा जी भोपाल से आज हम उनका सम्मान करने जा रहे हैं। और सुषमा जी का मध्य प्रदेश से, हमने उनके बायोपिक में भी देखा कि 2 बार वो विदिशा से सांसद चुनी गई। तो मध्य प्रदेश वासियों का उनके प्रति एक विशिष्ट अनुराग है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर निवेदिता शर्मा जी को आमंत्रित करूं और वो इस छोटे से सम्मान को ग्रहण करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर राजेश शर्मा कि वो उनके सम्मान में, उनके व्यक्तित्व के विषय में 2 शब्द कहें, और फिर मैं डॉक्टर निवेदिता शर्मा जी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर राजेश शर्मा साहब। Thank you so much, Dr. Raghav, and it's absolute big proud for me, to talk about Nivedita. She, right from, for years together, right from the way we interacted, she has been working for the children. वो खाली 2 चीज बात की, देश और देश के बच्चे और स्त्रियों का सम्मान पूरी तरह से होना चाहिए। वो ये मतलब एक पूरे जीवन के लिए सोचना एक बहुत छोटी उम्र में, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। एंड दैट्स व्हाट मिशन शी हैज टेकन एंड शी हैज बीन वर्किंग ऑन इट, एंड स्पेशली आफ्टर जॉइनिंग द चाइल्ड राइट्स, दिस SCPCR, she has been working relentlessly for the children's right. Anybody during COVID time also, if there was some children who lost their parents, she made sure that they get support, they get education. The same thing wherever she is going, wherever she finds anybody in need of some help, whether a child or a lady, she is there. So, and the kind of feeling always, she walks the talk. जो कहना है वो करना है, और वो बात हमेशा वो रखती है। तो इसलिए मुझे ये हमेशा लगता है कि सुषमा स्वराज जी का जब बात आ रही है तो उनके व्यक्तित्व के बहुत सारी चीजें मुझे निवेदिता में दिखती है, और आई एम श्योर कि वो और आगे खूब प्रोग्रेस करें और समाज की सेवा करें। धन्यवाद। Thank you, sir. I would now like to welcome Dr. Nivedita Sharma ji to please accept this token tribute and also address the forum. सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, क्योंकि सम्मान ये छोटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब सुषमा स्वराज जी का नाम लग जाता है तो अपने आप में ही एक बड़ा सम्मान हो जाता है। और मैं सुषमा स्वराज जी के बारे में एक घटना ये बताना चाहूंगी कि पहले तो जब मैं बहुत छोटी थी, यानी जब मैं 12th कर ही रही थी तब की बात है, संस्कार भारती का एक कैंप लगा हुआ था, उसमें सुषमा स्वराज जी एज ए चीफ गेस्ट उसमें आई हुई थी। और चूंकि मैं नई नई जुड़ी थी तो मुझसे बोला गया कि आपको सुषमा जी के साथ में ही रहना है। मैंने सोचा कि पता नहीं वो इतनी बड़ी लीडर है, मैं उनके साथ में रहूंगी, क्या करूंगी, कैसे करूंगी। तो मैं उनके साथ में थी सिर्फ और देख रही थी उनको, और बाद में मेरी इच्छा थी कि मैं उनसे एक ऑटोग्राफ ले लूं। तो जब वो हम सब लोगों को एक स्पीच दे रही थी, ऐसे छोटे से कमरे में हम लोग बैठे हुए थे, जितने लोग अरेंजमेंट में लगे हुए थे, तो उन्होंने एक चीज बोली कि जब हम किसी को पसंद करते, और मैंने उनको बोला भी नहीं, शायद ये टेलीपैथी थी कि क्या थी, उन्होंने एक बोला कि जब हम किसी को पसंद करते हैं या किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं तो है ना, हम सब लोग उसके है ना ऑटोग्राफ लेने के लिए चल देते हैं। बोले उससे अच्छा है कि हमने जब किसी को अपना आदर्श माना है तो हम उसके जैसे बनने की कोशिश करें। तो मैंने अपनी कॉपी को बंद कर दिया, मैंने कहा अब मुझे ऑटोग्राफ नहीं चाहिए। और उस दिन मैंने अपनी डायरी में लिखा कि अगर मैं बनना चाहती हूँ, अब छोटी थी तो इतना कुछ सोचती नहीं थी, तो मैंने सिर्फ इतना लिखा कि मैं जिंदगी में क्या बनना चाहती हूँ। तो मैंने लिखा जिंदगी में सुषमा स्वराज की तरह एक अच्छा व्यक्तित्व के साथ जीना चाहती हूँ। ये मैंने अपनी डायरी में लिखा था और मुझे नहीं पता था कि मेरी नियति मुझे कहाँ लेके जाएगी। पर जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, अभी जैसे झा मैडम को भी सुन रही थी,
तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी महिलाओं का जीवन भी ऐसे ही रास्तों से होकर गुजर जाता है कि जब बहुत परिवार में कम संसाधन होते हैं, परिवार बड़ा होता है, तो कैसे अपने को एस्टेब्लिश्ड किया जाए, कैसे अपनी पहचान बनाई जाए। तो उस ऐसे परिवार में से मैं जब निकल के आई और उसके बाद में मेरे पति हो, मेरे पूरा परिवार हो, मामा जी जैसे लोग जब मेरे साथ मिलते चले गए, मैं भी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाती थी और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते-पढ़ाते बहुत बोर हो गई थी क्योंकि ऐसा लगने लगा कि यही एक ज़िंदगी है, जाओ, सुबह जाओ, पढ़ा के आ जाओ। और अपनी पूरी सोशल लाइफ़ जो है वो कहीं न कहीं खो रही थी क्योंकि मैं शुरू से जब आई हूँ तब से मैं एक छात्र राजनीति में भी रही, तो समाज से हमेशा जुड़ी रही, बच्चियों के साथ में भी लगी रही। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं, कुछ और भी करना है। तो अचानक से मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म नज़र आया बच्चों के लिए काम करते-करते ऐसा लगता था कि बच्चों का कुछ हो नहीं रहा है, ये नहीं हो। तो मुझे जब किसी ने बताया कि ये चाइल्ड वेलफेयर एक कमिटी है और जो प्रत्येक हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है और हर एक डिस्ट्रिक्ट के सीएनसीपी बच्चों के लिए काम कर सकते हैं यहाँ पर रह के। तो मुझे लगा इसमें जाके एक बार देख के आती हूँ मैं कितना काम कर सकती हूँ। रियली मुझे ऐसा लगा कि वो प्लेटफ़ॉर्म मेरे लिए एक इतना बड़ा अचीवमेंट था कि मैंने जब अपनी उसमें भी भरा हुआ है फॉर्म में। मैंने जब एक ऐसा केस सॉल्व किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने मुझे चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में उन बच्चियों के लिए भेजा था, जो लगातार 7-7 साल की उम्र से प्रोस्टिट्यूशन में फँसी हुई थी। और कभी नहीं वो वहाँ से निकल सकती थी और मैं उसका एक माध्यम थी। मैं ये नहीं कहती कि मैंने ही वो किया। मैं सिर्फ़ एक उसका माध्यम थी और मेरे साथ में जितने शासन, प्रशासन, पुलिस हो, सभी लोगों ने इतना बढ़-चढ़ के सहयोग लिया कि इतना नामी-गिरामी व्यक्ति जिस आड़ में ये सारी चीज़ें कर रहा था, वो शायद कभी नहीं जाता। पर वो बच्चियों को यदि आप देखते और उनकी कहानी सुनते, तो मुझे ऐसा लगता है आज भी उनकी जो वास्तविकता की घटना है, वो अभी भी टीवी पे नहीं है। क्योंकि ना किसी में वो दम है, ना किसी के अंदर से वो आवाज़ आ सकती है, जो उन बच्चियों ने सहा है। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी थी। उसके बाद में मैं अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य हूँ और जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा कहीं परेशान, तो मैं कहीं पर भी होती हूँ, किसी भी हालत में होती हूँ, उसके पास पहुँचने का प्रयास कर सकती हूँ। और आज दुःख इसलिए होता है कि आयोग है, इतने सारे लोग हैं। आज भी मैं एक कार्यक्रम में थी, तो मेरे को 3 दिन पहले की एक घटना याद आ गई कि एक छोटी-सी बच्ची को भट्टी में झोंक के जला दिया गया। यानी आज भी हम उसी दौर में जी रहे हैं जब वो तंदूर कांड पहले हुआ था, निर्भया कांड पहले हुआ था और बड़ी पीड़ा होती है अंदर से कि कानून बन जाते हैं। इसलिए मेरा एक ही प्रयास है कि कानून अपनी जगह काम करेगा, कि समाज अपना काम स्वयं करने लग जाए और इसी के लिए लगातार जैसे सुषमा स्वराज जी भी यही कोशिश करती थी कि कोई भी आंदोलन हो, कोई भी विषय हो, वो समाज का विषय बन जाना चाहिए। और जिस दिन समाज का विषय बन जाता है, सारी समस्या का समाधान अपने आप ही निकल आता है। तो मेरा भी यही प्रयास रहता है और मेरे साथ में जब राजेश मामा जी रहते हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे से क्यों इसमें फॉर्म डलवाया और मैंने उनको बोला भी था। मैंने कहा मामा जी मैं अभी इस लायक नहीं बनी हूँ कि ये सम्मान मुझे मिलेगा। और जब मैं झा मैडम को सुन रही थी और भी शाली राज मैडम को सुना मैंने, तो मुझे लगा कि मैं तो अभी बहुत नीचे वाले पायदान पर हूँ और अभी ऊपर आने के लिए बहुत सारा काम बाकी है। और मुझे उम्मीद है कि भगवान ने अगर मेरे को लंबा जीवन दिया होगा, तो मैं उसे एक अच्छे जीवन में परिवर्तित कर सकूँ। धन्यवाद आपका इस सम्मान को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा और निवेदिता जी के इस ह्यूमिलिटी, जो कि सुषमा जी का भी एक व्यक्तित्व का चिर परिचायक अंदाज रहता था। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति केवल निर्वाचित हुए थे, उन्होंने अभी राष्ट्रपति बनकर कुछ कार्य किया नहीं था, 4 वर्ष का कार्यकाल बाकी था। उसके बावजूद नोबेल कमेटी ने उन्हें नोबेल पीस प्राइज से नवाजा। उसका कारण था कि उनकी जो सोच थी उसको उन्होंने नवाजा कि इतने बड़े राष्ट्र का राष्ट्रपति अगर शांति को अपना एक मैसेज बनाएगा तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। निवेदिता जी ने जो बात कही कि भाई समाज, उनकी जो यह स्पिरिट है, यह चेतना जो है कि सरकार का काम अगर समाज अपने हाथ में ले ले, कानून का काम अगर समाज अपने हाथ में ले ले,
तो फिर क्रांति को कोई नहीं रोक सकता। इस जज्बे को, इस स्पिरिट को हम लोग आपके इस स्त्री शक्ति सम्मान से नवाज रहे हैं। सुषमा जी उर्दू की भी बहुत प्रकांड विद्वान रही, जैसा कि हमने बायोपिक पे देखा। तो विशुद्ध भाषा का जो परिचय है और जो कमिटमेंट है, जो डॉक्टर राजेश शर्मा ने भी कहा, ये कमिटमेंट, ये जो पीड़ा है, ये जो एम्पैथी है। सुषमा जी ट्विटर पे ऐसी बैठी हुई थी, ट्विटर तो एक माध्यम है कि कहीं से किसी की पीड़ा का भाव आया, अरे उन्होंने पूरा भारत का विदेश मंत्रालय, केवल विदेश मंत्रालय तक सीमित नहीं था, 193 देशों में जो भारत के उच्चायोग, राज्य आयोग जितने थे, एंड देयर वाज अ टाइम जोन डिफरेंस, एंड शी वाज द रियल मदर इंडिया who was really taking care of the expats who were stranded across. I think that was the spirit which we saw in the elaborate nomination of Dr. Nivedita Sharma, and it was seconded by Dr. Rajesh Sharma, one of the very eminent personalities, a credible remark over there. हम आपको बहुत बहुत we really wish you all the best कि आप मध्य प्रदेश में जो कहते हैं कि अहिल्याबाई होलकर जिस राज्य से ऐसी विभूतियां जिस राज्य की रही हैं, you really take forward this mission and mandate of child care, क्योंकि सबसे vulnerable section अगर महिलाओं के बाद अगर कोई है, जैसे डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने कहा, वह बच्चे हैं, और बच्चों में भी बच्चियां जो vulnerability फेस करती हैं। सुषमा जी ने ओवर एंड ओवर अगेन इन हर टॉक्स शी टॉक्ड अबाउट दैट, ये जो मानसिकता है इसको बदलना होगा नारी सशक्तिकरण के लिए। वी रियली विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी रियली प्रे एंड वी रियली request all our other participants, all our other awardees to really go deep into this domain of child right protection, which has really been taken in the right strides, led by at the NCPCR level by Shri Priyank Kanungo ji, and also as we saw Dr. Nivedita Sharma ji. In our schools, the child right protection, हम लोग बहुत सारी चीजें we try to push it under the carpets, but let's try to create a culture of नारी सुरक्षा. I think बच्चियों की जो सुरक्षा का aspect है, in a proactive space, we can really take it up, and schools are perhaps the best bastion for creating that environment, that mindset. So thank you so much, Nivedita ma'am, to have really accepted this token tribute. Moving forward, we move to yet another illustrious institution, an institution जो कि एक बहुत ही एक भव्य और दिव्य एक प्रेरणा देता है, अपनी बुआ के द्वारा जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन को जो आगे बढ़ा रही हैं, चेयरपर्सन मैडम प्राची ग्रोवर एंड द होल टीम एट विद्या भारती स्कूल। मैं 2 मिनट के लिए इस साइटेशन को ऑफ करना चाहूंगा, और जो समूचा विद्या भारती समूह यहाँ उपस्थित है आज इस संध्या, इस ट्रिब्यूट को लेने, तमसो मा ज्योतिर्गमया, जो इनकी जो भावना है, और what a prolific submission. I think the best submission which we received, इतना नवाचार से उत्प्रेरित है कि किस प्रकार से स्त्री शक्ति का सशक्तिकरण इन लेटर एंड स्पिरिट विद्या भारती स्कूल सेक्टर 15 रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नाम ही स्त्री शक्ति का एक परिचायक है। तो मैं मैडम ईरा विश्वकर्मा जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं पूरा जो समूह है, पूरा जो संकुल है विद्या भारती विद्यालय का, आई वुड लाइक टू ब्रिंग देम ऑन स्क्रीन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट बिफोर वी बेस्टाउ अपॉन दिस अवार्ड टू देम। जूम की मर्यादा है कि आई हैव टू क्लोज द स्क्रीन शेयर टू गेट एवरीवन ऑन कैमरा। So please, Vidya Bharati people, please come over there. This is a tribute to your collective spirit, which is being led by your chairperson, Madam Prachi Grover. So I would just bring you all. Yes. Thank you so much. Thank you so much. I will come back to the citation, but I would request Madam Ira Vishwakarma ji to address the forum, to address the whole forum over there. Please, ma'am. Thank you so much. I hope I am audible. Ma'am, loud and clear, please, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you for this honor. First of all, good evening to everyone present here, and congratulations to all the winners. सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति सम्मान, ये ऐसी शख्सियत हैं जिनसे मैं भी काफी प्रभावित हूँ,
और जब मैं इस अवार्ड सेरेमनी की प्रोसीडिंग्स देख रही थी तो मेरे दिमाग में अपने स्कूल को लेकर के कई बातें आ रही थी. Vidya Bharati School actually resonates with this Stree Shakti, you know, the Stree Shakti, the school, our great founder principal. She was a visionary, Madam late Subhash Grover. She was the founder principal who set the school, and the school has seen unparalleled growth under the dynamic and visionary leadership of our present chairperson, again a Stree, Shakti, again a Stree with full lot of Shakti, Madam Prachi Groverji. And under her leadership, the school has achieved ranking as an eminent educational institution in North Delhi. The school, you know, that's the fire that was kindled to bring world-class education to every, this area. When this school came up, hardly had educational institution of that standard. It was the vision of the Grover family that quality education was provided through this school. The school boasts of world-class facilities for academics as well as physical and cultural growth of the students. The motto of this school is Gateway to the World. And true to this motto, you know, the school takes pride in introducing the latest pedagogical, educational pedagogies and providing technical resources so that the children who pass out from the school are actually global citizens of tomorrow. So, and you know, this journey continues thanks to a very dedicated staff, which is carrying forward this vision of our visionary chairperson, Madam Prachi Groverji. So with this, we thank you so much for this recognition, and Jai Hind to everyone present here. Thank you so much. I think Rupali Sharma ma'am would like to speak. Yeah. Please come in directly. Everyone from Vidya Bharati who would like to really share their experiences, please just come in and celebrate this moment of joy and commitment and dedication. वो कहते हैं ना कि बुआ की परंपरा को आगे बढ़ाना. सी भारतवर्ष में रिश्तों का बहुत बड़ा महत्व है. पश्चिम में कहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखिए. आपने अभी देखा डॉक्टर निवेदिता शर्मा जी ने अपने मामा जी को यहाँ पे स्तुति की, उनके बारे में बात कही. तो रिश्तों को हम नहीं छिपाते हैं. यह एक बहुत बड़ी भारतवर्ष की परंपरा है और यही स्त्री शक्ति जो भारत और रिश्तों को जो फलक्रम है, it's our स्त्री शक्ति. So anyone from Vidya Bharati, please just come in and just pay your humble tributes to your institution, because institution का founder तो एक होता है, पर उस institution की जो परंपराएं हैं, उसके जो traditions हैं, you collectively take them forward and it's your celebration. So just come in and just pay your humble tributes quickly out here. Thank you so much. Please introduce yourself and just speak a few words. Yeah, from Vidya Bharati. Anyone coming in? Rupali Sharma ji wanted to speak. Yeah, please just come in directly so that we can move on. Yeah, please. You can switch on. Please unmute yourself. Yeah, then only the screen will be visible, please. Or maybe I would request Dr. Ira Vishwakarma ma'am, whosoever wants to speak from her school, because she knows each and every one. So please, ma'am, 2 or 3 speakers. Sure. Aparna ma'am.
Aparna ma'am, Mansi ji, Rupali ji. Yes, ma'am, I would like to speak like from past 23 years I'm working. Good evening everyone. For past 23 years I'm associated with this institution. I have worked under the leadership of Ma'am Grover. Now I'm working under the leadership of Ma'am Prachi Grover. So for the last 23 years I have seen my growth as a teacher. So from one ideology to the another ideology, like Ma'am Prachi ma'am, is totally the total pedagogy that we are following right now is totally based on the NEP. NEP. So I would really like to thank for my growth as an individual, also as a teacher, also that I have worked under the leadership of Madam Grover, Prachi ma'am, Ira ma'am, and to the principal Shwanika ma'am also. That's all. So thank you everyone. Thank you so much, It's really I'm feeling really elated that my school has won this very prestigious award under the leadership of Prachi ma'am. Thank you, Aparna. Anybody else would like to speak? Okay, so we move on. This was the Vidya Bharati school at Rohini over there. So we really congratulate them, and the kind of submissions which have really come to us, it's really stellar. By all means, it was done in a very short period of time, but the quality is really stellar. And I think the booklet which will go to them, probably we'll try to cull it out as early as possible. And that is the index of Stree Shakti, which needs to be reverberated across the nook and cranny out there. And we would now like to felicitate yet another. Excuse me, sir. Special, yeah. Thank you so much, and thank you to through this forum. I would like to thank my English department and of course Rima ma'am for her contribution in coming up with the performer that was quite challenging. She just wants to come in. She has raised her hand, so let's listen to her, because this is it was poetry and prose at the same time, and it was studied with action. So this kind of a documentation is really required. Abhi, we had a roundtable on the 3rd anniversary of NEP, and the last speaker was talking about NEP. NEP has to actually translate at the level of the school. तो जो women led development की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो जो इंस्टीट्यूशन में जो गवर्नेंस होनी है वही राष्ट्र की आधारशिला बनेगी. I would request Reema Badhwa ma'am to just come in and speak about her experiences in filling up this elaborate tome of questions. We have been criticized by a whole lot of our participants and some people who could not, that it is really elaborate. It's very challenging. So Dr. Ma'am Reema Badhwa ma'am, please come in. Yeah. Good evening, everyone. Thank you so much, sir, for giving me the opportunity to speak on behalf of my school. And this filling up this form was indeed a privilege. In fact, getting this award for our school is indeed a privilege for all of us. And we are really grateful to you that we have, although we got it at the very last moment, but it has been a great privilege, and we are thankful, grateful to you for selecting us, because frankly, as you have mentioned, you wanted me to like tell you what I was going through when I was going through that form. Frankly speaking, I could resonate. I had written that. We had in fact mentioned that also in that form, that our institution is a women-oriented, women-run school, women-oriented. Our chairperson, Ma'am Prachi Grover, she, frankly speaking, the time that I've been here, I've learned quite a lot from the different perspectives. She talks about teaching, about involving everybody, the teamwork that we are usually, the work we do here. It is all a teamwork, and what is best is she always is ready to take inputs from all of us. She always she is always into progressive mode. I mean, we always learn something or the other.
although during COVID times, like we say, everything came to a standstill. At that time also, we were so much into learning new technology through Canva, and she taught such a lot of things to us. She's always thinking about bringing up new ideas, how we can help our students, how we can, and it is not only about education, frankly, it is a total holistic development, which I mentioned there also. It is actually there. We talk about Poshan Ma, we talk about nutrition, we talk about equality, we talk about following all the SDGs. We do that in practical life. We do fulfill all the 21st century skills. Everything is fulfilled there, and ma'am ensures that each and every person is well trained. We get our in-house trainings, we get our offline, online trainings. Everything is there. Ma'am really ensures that we are updated, and sometimes we do feel that it is a lot too much. But yes, the next step, when we understand all that we've learned, that is really a great thing for us. And I take this platform and I really express my gratitude to ma'am for showing us the right path. And I feel whenever I started the journey, it's been quite some time since I've joined the institution. I've learned quite a lot, and I'm quite ahead in what I was earlier before joining this institution. So yes, One thank you last so much. editorial question, like which was Yeah, the so which was that the is Nari toughest Shakti, sir. section? Which was the Yeah, toughest section you found in the nomination form? Sorry, sir, I couldn't Which get was you. the toughest section you found in the nomination form? So toughest was when we're talking about the controversial thing, no? That this particular thing, if this is there or that is there, if you like talk about both the things, that was a little The tricky kind of complementary thing, but it virtues, was the really lovely complementary doing it. values. Okay, perfect, Yeah, perfect. but it was really Youth and lovely doing it. agility. Thank you. That was Thank you a so little much. tricky, but not that tough. It was like, okay, when I could understand, okay, what that is what you wanted to know. Okay, how can you take two opposites together? And then that was really wonderful. Hats off to you, whosoever has planned that. That was really wonderful. See, this is the quintessence of Bharatiya Stree Shakti. It balances it out. The forces Yeah, that are was the balance. central in nature. Yeah. So that was the whole purpose behind that section. So thank you so much, Vidya I Bharati could School. understand that. I could understand that you want to see how well we balance all this, because this is actually needed. Yes, Doing yes, something theoretically and doing something practical is really two different things. And we yes, do it practically, so it was good for me. I mean, thank you so yes, much for that. yes. So moving Congratulations, forward, everyone. Vidya Bharati. yeah, thank you so much. And I would request all the participants to stay tuned. We have a couple of more awardees, so your presence would really help. We had kept you as the showstopper, but then there were requests from Madam Vishwakarma and others, so we just brought you out of turn. We have a very special Stree Shakti from a town called, a lesser known town from the lovely state of Madhya Pradesh, Narasinghpur, Gaderwara. We have Dr. Gauri S, and she represents the Crayon International School out there. I would request Dr. Gauri to accept this token tribute, and if there is someone else from the same school who want to speak about Dr. Gauri, they're most welcome. Dr. Surbhi, over to you. Am I audible? Yeah, ma'am, loud and clear, please, ma'am. Yeah. Happy evening to all, and I'm very thankful to all who has bestowed me with this great award. As Sir rightly pointed out, my school belongs to a very rural area in Madhya Pradesh. Narsinghpur is a district, and our place, Gadarwala, is little on the outskirts. And really, we have, as a team leader, we are facing many challenges, and as we are handling small children, and my aim is to bring whatever the city children are enjoying the luxurious things in the field of education. Our aim is to bring those things to our children who are located here. And particularly, we want to talk about nowadays what is in the situation. I feel like particularly the tolerance is lacking in our children. So we try to handle them, all the situations, whether it is a good or a emotion should be balanced. So these are the values we are trying to inculcate in them. And particularly, we are focusing on girl child education. We are providing them so many opportunities, like facilities
some villages, remote villages are there where transportation is not available. So we are sending our school transportation and we are giving them education at a maximum of discounts, like 50% of fees we are collecting from them. So these are the small initiatives we are taking, and this award definitely will motivate me to do more things to my children. Particularly, I want to tell this award, more than me, my husband is very motivating me to apply for this award. So I would like We would to really share like to bring him out here. We would really like to hear him out about the persona of he's Dr. Gauri as how, he's definitely the motivating force behind me. Without him, I would have not achieved these things. If I he's would just around, like to- please let him come and yes. speak. Yeah. Yes, sir. Just. Welcome, sir. Sir, good evening to all. Good evening to all. Dr. Gauri is a very patient school and very DOT person. She especially works in the children's where has the learning disability, and she focused for the improvement. She works very hard for the upgrading the girls' education from the rural areas. She's tried to focus on the skill education. She has already almost an 85 research paper published in international national journals. She has contributed to more than 15 edited books. She is an excellent person, and she is passionate about the human values and peaceful things. These are the qualities of her, and she is very really devotee, and she worked very hard for especially for the all children, but especially as the inclination is the learning disability and the women's education. My aim is that I learned the human empowerment in the books and the newspaper, but when reality comes to reality, is upgrading women in the family and the society is very essential, and it is a true tribute to Ma'am Sushma Swaraj, just contributing for the woman empowerment. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Gauri, to have connected out here and dared to express your Stree Shakti Index. You mentioned a very important aspect about the tolerance part of the students. Would you like to just speak a bit more about that? Is it an outcome of the kind of OTT platforms, the kind of content which the students are devouring? Because this also relates to the child security part of it all. A very, very important aspect you have mentioned. So how to, because the first question, the first element of Stree Shakti is serenity. And Madam Jha has explained it so very meticulously in her elaborate submission that serenity in the workspace. And जब Madam Ranjana Jha यहाँ आए तो उनके persona से ही एक serenity सी छा गई. So how, Dr. Gauri, you are trying to just small ask and then we move on to the next awardee. Over to Dr. Gauri. What I observe is nowadays we are bounding to the nuclear family system where we are having a child. So a single child family, parents are very much giving them backups, cushions, support is there. So when they are exposed to the situation where they are coming to the school where everybody is treated normally, and even the small scoldings from the teacher or from their peer groups, they are getting easily upset and talking about the results, and these are on various stages. So even boards, CBSE boards have doing so many things, counselings to support them to overcome their stress levels. So the tolerance level have gone down that even a small word which we as teachers are using to guide, they cannot tolerate that, and they are taking the very worst decisions. I was disturbed by the past 2 days by the incident that happened in UP. So I was coming in my mind, and I was wanting to hint it here. Sir, even sorry to interrupt you. Please, ma'am. Healthy evening to one and all. This is Aparna Chatli from Vidya Bharati School. So everyone is praising for, of course, it's a Nari Shakti and we are Nari. End of the day, but everything, whatever is spoken for Prachi ma'am, Prachi Grover ma'am is absolutely 10 on 10. But one thing which really, personally, I feel is she is philanthropist at the same time, which is very, very, means it's required
till date, because the students, they want to, in the remote areas, if we are talking, even in the Delhi, so many remote areas are there, and the parents are there. They want their kids should get good education, and our school is the rocking school in Delhi Thank only. you. I can say now the India only, but they are not privileged to get good education. So ma'am is philanthropist at the same time. Prachi Grover ma'am, she takes care of all the things, whatever a child needs, whatever a teacher needs. So actually, I have worked with Madam Grover, which you Thank are you. just explaining for the relations, Bua. But Perfect. now I'm working with Madam also at the same time. Perfect, I'm not ma'am. finding Thank any you. difference anywhere. Thank So you, ma'am. really, Prachi ma'am, it's Thank you. a very pride moment for Vidya Bharati. At the same time, we Nari, and we are the rocking one, and you have rocked Vidya Bharati like anything. Thank you, sir. Thanks Thank from you, our ma'am. side. Thank you, ma'am. So Narsinghpur, as we told, that it's 250 kilometers from Bhopal and 90 kilometers from Jabalpur. And Google Maps show that to cover 90 kilometers, still it takes around 2.5 hours. So we can understand that how remote and rural this lovely town of Narasinghpur is all about. And in the Indian pantheon, Narasingh is the god, the god of who saved Prahlad from the demon king of Hiranyakashipu. So that is the name of this town which bears over there. And what an empathetic heart Dr. Gauri has. And she has explained so very well that because of the nuclear family, the intolerance, the stress factors which the kids are happening, and with her serenity, she is really tackling it so very well. Moving forward for our next awardee this evening, Madam Deepika Bhambe, coming from Bhojpal, Bhopal, the Pudar group of schools. Madam Deepika Bhambani, ma'am, one of the very illustrious Stree Shakti from this lovely heart of India, we can say. I request Madam Bhambani to accept this token tribute and also address this forum. Madam is there on call with me. Her signal was a bit weak, so she could not join and log in. Had to leave from there. So we've taken her on voice call. Ma'am, you may kindly express yourself. Lovely. Yeah. Yeah. Good evening, everyone. It is pleasure talking to you all. As my network was weak, I could not make it online. But I'm really very happy. And the step which Dr. Surabhi, because I know Surabhi Madam, so the step which she has taken, and she is involving herself into this rethinking organization and working day and night, which is very good. I'm working with the students from last so many years, and I can tell only one thing, that being a female, that Nari Shakti actually helps. Like when the students from other forums, when they passed out and they come back and they say that a lot of things have motivated them, and what they are today is because of the teachers which have helped them to and motivated them and boosted them to work on it. And this is what I feel, that if you have enlightened even a few percentage of the students also, and they have come up with such, that's the best part. And this is what, and these kind of awards, the Sri Shakti Forum, all these things actually inspires us to work more. And what I feel after getting this reward, I think so the responsibility has increased more rather than just taking it up, because now you are more responsible to what people are expecting from you, and you have to work on it. So I feel that's the best part, that if you have got a reward, anyone of us who all are being awarded today, we are more, now we have to work harder and more to get it, what we have actually implemented, and we have asked ourselves to do it into it. Thank you so much, and I congratulate each and everyone in the forum for being awarded. And thank you, Dr. Surabhi, because I know you personally. So thank you so much. And the Sri Shakti, Sushma Swaraj, definitely she was a lady with whom one can get inspired. And there were so many things which she has done. And I think so these kind of ladies not only help us, they not only help us, also give us the right path. I can say that. And that's all. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for such encouraging words, and hope the signal would have been better, but we could at least have your voice
out here. Thank you so much. There's a special request from Dr. Vaibhav Goyal from Subharti Vivekanand University. He wants to pay his tributes to his CEO, Dr. Shalya Raj. So I want to bring him to do the honors. Dr. Vivek Goyal, please. Yeah. Thank you. Thank you very much, sir. At the outset, I would like to pay thanks and my gratitude because the title you have Please given open up your camera if possible. Yeah, if possible. Yeah. I think now it is over. Yeah, lovely, please. Yeah. So actually the title you have given, the Rethink India. आज हम जब बात कर रहे हैं आजादी के लगभग 75 वर्ष बाद और जब स्वर्णिम महोत्सव की बात की जा रही है, तो रीथिंक इंडिया जहां पर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन एक वीमेन वर्कफोर्स का जो होता था, अगर हम आजादी से पहले के 200 साल और उससे पहले के 700 साल देखें तो बहुत कम लोग मिलते हैं। तो आपने जिस तरीके से रीथिंक इंडिया के नाम पर हमारी सुषमा स्वराज मैडम की स्मृति के अंदर स्त्री शक्ति सम्मान का आयोजन किया, आई वुड लाइक टू पे थैंक्स टू यू first of all because you are here to acknowledge the contribution of the legend women of the country. Secondly, if I would like to talk about our CEO, Chief Executive Officer of Swami Vivekanand Subharti University, I would like to add couple of instances. अभी recently अगर मैं बात करूं, मैंने देखा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, मैं पैनल में हूं, कंसल्टेंसीज के अंदर हूं, वहां के जो फाउंडर्स की फैमिली है और जो वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, वो खुद उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने यहाँ की सीईओ मैडम की, चाहे वो हॉस्टल इश्यूज हो, कॉलेज इश्यूज हो, कोई भी बच्चा उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है एज एल्डर सिस्टर। मतलब वहां पर वो एक गैप नहीं है जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है। तो उस तरीके का 24/7 कंट्रीब्यूशन एंड दैट टू द कमिटमेंट फॉर द एकेडमिक एक्सीलेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन, तो इस तरीके की चीजें यदि हम राउंड द ग्लोब जाकर देखेंगे तो बहुत कम पर्सनैलिटीज इस तरीके की दिखाई देंगी। तो हमारी सीईओ मैडम जो हैं, उनका आपने चुना इस रीथिंक इंडिया के अंदर सुषमा स्वराज स्मृति अवार्ड के लिए। आई एम थैंकफुल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वन एंड ऑल एंड थैंक यू एवरीबॉडी। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष। Thank you so much. We come to the close of this commemoration और इसको हम एक लास्ट में एक ओपन हाउस की तरह अगले 5 से 7 मिनट if anyone wants to just come and comment upon the other awardees, what they learned from others। एक जो पूर्णाहुति का यज्ञ होता है भारतवर्ष में कि सभी की आहुतियां हुई, अब ये अंत में जो ओपन हाउस है 5 to 7 minutes, anyone who just wants to come in, they can just come in, speak out, pay their tributes to Madam Sushma Swaraj, to any of the awardees, what they learned from them. They are just most welcome. And then I would request Dr. Surbi to give the vote of thanks, and we will conclude today's commemoration in the legendary memory of Madam Sushma Swaraj, who was really the epitome of Bharatiya Stree Shakti. उनकी जो ट्विटर वॉल है उसको हम लोग कल आउट कर रहे हैं, और जो जिस तरीके का एस्पेक्ट है, because we cannot defy the role and responsibility, the fulcrum what our mothers are there. तो जो motherly care है, despite that, and I think today's highest epitome, Professor Dr. Ranjana Jha ma'am, the way she has taken the entire stride in her own life, her daughters so illustrious like her, even taking, and her sisters are just coming to pay tributes to her. This is really remarkable. So anyone who, I think Abhay sir wants to come in and speak out, pay his tribute. So please just come in, and we will just have 5-7 minutes and then we will conclude. Thank you very much for giving this opportunity. I am on behalf of Dr. Shalya Raj, Swami Vivekanand Subharti University. She has been a wonderful person to let you know, I mean, this forum, not only women, it's about every field. She's an all-rounder, and probably looking into not only the education of the poor, the needy, the students who require higher education, to many other fields, and especially the environment sensitivity. She will not allow in a meeting to leave a small sip of water also in the glass. She says you have to finish it and go, because many people don't get water to drink in our country. Oh. So that's the thought process what she has in her mind about environment, about poverty, about child education, about higher education, and many other things, which I think this the time what we have may not be possible to explain her.
here, and I thank Stree Shakti, Samman committee for giving this award to her. It would be only an encouragement to her to move on forward and help us all to be with her to make many more contributions to the society of the whole country. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you so much, Bhai sir. Thank you so much. Anyone, I think Dr. Rajesh Sharma would like to just comment upon concluding comments, as we say, because यज्ञ की पूर्णाहुति में वयोवृद्ध होताओं का, वयोवृद्ध सभी की समिधा आनी चाहिए, because this is end of a grand beginning, and Dr. Rajesh Sharma is a doyen academician leading the frontiers. And I would really, my pointed question, how NEP is focusing on the empowerment of Stree Shakti per se? Actually, of course, NEP says that we have to bring the Indianness and the all element of not only just Stree Shakti, right from child, inclusion, all ladies, and SCDG, the disadvantaged group, must be taken care of for education. That is what NEP is trying. So anybody, right from, it is not gender biased or for particularly Stree Shakti, for all children. NEP is coming also. That is nice. Yeah, I was just saying, Nivedita is able to do because of the same support from her husband, Dr. Mayank. Mayank Chaturvedi is again an absolutely academician and a very, very well experienced journalist. For last almost 20 years, 20 plus years, he has been there in that. So that's what I just wanted to add. Thank you and fantastic work. And I must congratulate both Dr. Surabhi and Dr. Raghav for being such a nice platform to create. Quick concluding comments from Madam Vishwakarma and Madam Ranjana Jha, and then Dr. Surabhi would just pass the word of thanks. Yeah. Thank you. मैं रंजना झा सभी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ। सुषमा जी के नाम से जुड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और जितने भी उनके गुण अभी आप उनके बैकड्रॉप में जो दिख रहा है, वो सारे अगर हम लोग अपने आप में आत्मसात कर लें तो कोई दुविधा नहीं है कि हम एक सुंदर समाज और एक सुंदर भविष्य और एक सुंदर बच्चों का भविष्य हम निर्माण कर सकेंगे। जहाँ तक कि एनईपी की बात है, एनईपी बहुत ही अच्छी चीज है अगर हम उसको अपने आप में इनकलकेट करें। उन सारी चीजों को इनकलकेट करना, बच्चों के जीवन में लाना, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और समाज को मुझे देना ही देना है, तो एनईपी जो है मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, और सबसे ज्यादा उसमें भारतीयता का जो इनपुट दिया गया है हर सब्जेक्ट में। अभी हम लोग मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं जिसमें कि जैसे मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, फिजिक्स में वैदिक काल में क्या था हमारे यहाँ, उस चीजों को भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं और हम लोग इस विषय पे काम कर रहे हैं। और सुषमा जी से प्रेरणा लेकर के, ये जैसे इनकी सोच बहुत आगे की सोच थी, उसी तरह से आगे की सोच लेकर के हम लोग समाज को अपने एक्सपीरियंस से हम लोग रिटर्न बैक करना चाहते हैं। जो अभी तक समाज से हम लोगों ने अर्जित किया है उसको जस्ट मैं रिटर्न बैक करना चाहती हूँ, और सभी अवार्डी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। सुरभि जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, जो इतना बड़ा इसका जैसे फॉर्म की बात हो रही थी, ये सचमुच में सबसे डिफिकल्ट काम उस फॉर्म को भरना था। ये मार्च में ही आया था और मैंने एक बार शुरुआत की थी, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे और बहुत सारे काम थे। मैंने कहा कि ये बहुत ही वेल डिफाइंड थॉट प्रोसेस के बाद ही इसको भरा जाना है, मैं नहीं भर सकती हूँ इसको इतनी जल्दबाजी में। फिर बाद में इनका आया, तो फिर मैंने कहा कि जब दोबारा आया है नॉमिनेशन के लिए तो मुझे भरना ही चाहिए, और फिर बहुत टाइम लगा करके मैंने उसको भरा। इट वाज रियली वेरी टफ टास्क टू फिल अप दैट फॉर्म, और फॉर्म में जो चीजें आप लोगों ने भरवाई और हर चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन और हमारा व्यू पूछा, उसको भरना इट वाज रियली ए चैलेंज फॉर मी, लेकिन मैंने किसी तरह से उसको पूरा किया और मुझे लगा कि मेरी मेहनत का फल मुझे मिला। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि सबों को जो जिन्होंने भी पार्टिसिपेट यहाँ पे किया है, बहुत मेहनत किया है पूरी जिंदगी,
और इस लेवल तक आने के लिए, इसको पाने के लिए हर किसी ने हार्ड वर्क किया है. So I am congratulating everyone and we are giving back our experience जो हमने अभी तक gain किया है, we are giving back to society. Thank you so Thank much. you so much, ma'am. Madam Ira Vishwakarma, ma'am. Yeah. थैंक यू सर. सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत थैंक्स. आपने इतनी खूबसूरती से ये सारा प्रोग्राम आपने एंकर किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू डॉक्टर सुरभि जी जिन्होंने इतनी हम सबको इस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे लाके ऑनर किया, हमारे स्कूल को ऑनर किया, हमारे स्कूल को एज अ स्टोर शॉपर कंसिडर किया. थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स हियर. थैंक यू सो मच. डॉक्टर सुरभि, कंक्लूजन. तो कहते हैं ना कि वो जो आखिरी आहुति है वो इतनी दिव्य और इतनी संपूर्णता प्रदान करती है. मैडम रंजना झा एंड मैडम डॉक्टर ईरा विश्वकर्मा मैम ने इतनी खूबसूरती से और इतनी दिव्यता से अपने शब्दों को और इस पूरे कार्यक्रम को समराइज किया है. मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सभी डिस्टिंग्विश्ड लुमिनरीज और विमेन लीडर्स को. मैं सभी को अपने अपने क्षेत्र में एक शतरानी, एक रण चंडिका के रूप में, एक एडु वॉरियर और एक सोशल एडु वॉरियर के रूप में मैं सभी को देख पा रही हूँ. और सुषमा स्वराज जी जो कि एक इंडियन वुमेनहुड की, जो मैंने कहा कि हम सब महसूस कर ही रहे हैं कि वो कितनी संपूर्णता उनके व्यक्तित्व में, कि कुकर की सीटी भी है और एक विदेशी एनवॉय से बात भी हो रही है. तो हम सब आज उनको याद करते हैं और उनकी इस नारी शक्ति का जो उन्होंने जो श्रेयस्कर उदाहरण उन्होंने और प्रेरणा स्रोत हम सब के लिए प्रस्तुत किया है, उन्हीं पद चिन्हों पर उसी प्रेरणा के साथ आज हम आगे बढ़ने का, अपने जीवन को और ज्योतिर्मयी बनाने का एक संकल्प और लेते हैं. And with these words, I thank you all for gracing the Stree Forum 2023 and Yatra Naryaste Pujyante Ramante Tatra Devata. इसी भाव के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार, अभिवादन.